Xanthis. I am Mrs. Ekta God with my new one video for the chapter Life Processes. In this video, I am going to discuss about the important question answers. As already I have given the important question answers from the nutrition, in this video, I am going to discuss about the few important questions from the topic respiration. As it is a part 3, so you must watch the part 1 and part 2 for the important questions of the topic respiration. Now let's begin about the next important questions. So your question number 31 is, what is expiration? Now you have to learn this answer as I have given all the answers in steps. So if you learn anything in the steps, then it looks very easy and easily you can grasp and learn the content. During the expiration or exhalation, the inner intercostal muscles contract, bringing the ribs back to the original position, and the diaphragm is also raised back. So, as inspiration, I told you when we are inhaling the air, that is known as inspiration. So expiration is the just opposite process in the lungs. When we are throwing out the air outside the lungs, that is called the expiration. So at that time muscles will contract. जो muscles हैं वो contract हो जाएंगी और ribs अपनी original condition में आ जाती हैं. And the diaphragm is also raised back. और डायफ्राम फिर दोबारा से पुश होने के लिए तैयार हो जाता है. What happened next? This reduces the space in the chest cavity and increase the pressure. Because of that condition, the chest cavity space reduces, which increase the pressure inside. This expels the air out of the lungs. अब ये जो प्रेशर बिल्डअप होता है, ये जो भी एयर है उसको बाहर निकालने का, बाहर फेंकने का काम करता है. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सपायरेशन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर लेंटिकल्स? अब आपसे पूछा जा रहा है लेंटिकल्स किन्हें बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. नाउ लर्न दिस आंसर. In woody stems, the entire surface is covered by dark sheath, which is impervious to gases or water. अब जितने भी woody stems यानी हमारे बड़े बड़े trees होते हैं या almost all the plants, those are having the woody structure, so they are covered with the dark sheath. तो वो भी impervious होते हैं यानी कि उनमें कैपेसिटी होती है कि वो एटमॉस्फेयर से गैसेस और वाटर ले सकते हैं. ठीक है, तो इसी काम के लिए लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं. आप सेकंड पॉइंट क्या याद करेंगे? However, there are certain openings or pores in the layer of bark. These are called the lenticles. So, what is the function of lenticles? To transport gases or water in the woody stems also. They are visible more raised than the general surface of the stem. तो बच्चों ये लेंटिकल्स कहाँ पर विजिबल होंगे? जो स्टेम की एक जनरल सरफेस होती है उसके कुछ ऊपर ये लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं. एट द बेस ऑफ द लेंटिकल्स आर लूजली अरेंज्ड सेल्स विच अलाउ द डिफ्यूज गैसेस टू पास इन एंड आउट. तो जहाँ पर लेंटिकल्स का बेस होता है वहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं जो बहुत लूजली पैक्ड होती हैं और वहीं से ही गैसेस का और वाटर का डिफ्यूजन होता है. क्लियर? तो लेंटिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द वुडी स्टेम्स. क्वेश्चन नंबर 33 इज, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? तो आपको अब यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन को डिफाइन करना है. चलिए उसको लर्न करते हैं. इन द सेल्स द सबस्ट्रेट often glucose is broken down into the carbon dioxide and water in the presence of oxygen. So whenever photosynthesis process occur in the cell, after that glucose has to be break down into the carbon dioxide water.
और ये प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उस प्रोसेस के बाद ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही है, एंड आफ्टर दैट व्हेन इट विल गेट यूटिलाइज्ड, then again it has to be breakdown. This process release energy and involves a series of biochemical reactions. अब ये जो भी प्रोसेस होगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लांट को एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी उसको लगातार चाहिए। तो अब यहाँ पर ये ब्रेकडाउन कंटिन्यूस होता चला जाएगा, जिससे कि एक चेन रिएक्शन बनती चली जाएगी। इन्हीं चेन रिएक्शंस को हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। So this is called the cellular respiration. So whenever glucose break down in the plants to provide the energy to the plants in the form of biochemical reactions, that is known as cellular respiration. Now let's see the question number 34. What are the major steps of cellular respiration? As I told you about the cellular respiration, now you have to learn about the major steps of cellular respiration. So the major steps of cellular respiration are, first is the glycolysis. Don't forget it. Very, very important. Second is Krebs cycle. Third is electron transport chain. So in these three processes, cellular respiration is going to be complete. Glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain. Let's see the next one. Question number 35 is, what is anaerobic respiration? Up here, many times in my videos of the respiration, I have given the difference and the meaning of aerobic and anaerobic respiration. Always it is very important. So anaerobic respiration is respiration or breakdown of food in the complete absence of free oxygen is called anaerobic respiration. जब कोई भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। Now question number 36 is, name two anaerobes. अब आपसे एनारोबिक रेस्पिरेशन जहां पर हो रहा है उनसे रिलेटेड कोई भी टू एग्जांपल्स भी पूछे हैं। So you can give the answer, Escherichia coli and Clostridium tetani. They are the two anaerobes. Those can respire in absence of oxygen. Let's see the next one. Question number 37 is, where do you find anaerobic respiration in animals? अब एनिमल्स के भी आपको एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, चलिए उनको भी याद कीजिए। In animals, anaerobic respiration can be seen in certain skeletal muscle cells when they are short of oxygen. So sometimes we get the cramps in our muscles. कभी कभी हम बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं और अचानक से हमारे पैर में दर्द उठ जाता है ना? तो वही क्या होता है? That is the example of anaerobic respiration. उस टाइम वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई अचानक से कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं, स्पेशली लेग्स में आ जाते हैं। सो skeletal muscle cells are the examples of anaerobic respiration in animals. As for example, during the period of heavy exercise. Let's see the next question. Question number 38 is, what are the types of anaerobic respiration? अब आपको anaerobic respiration के types भी याद करने होंगे। Anaerobic respiration is of two types based on the products formed. जितने भी उसके products बनते हैं, anaerobic respiration is the condition of
absence of oxygen. So here can be the multiple kind of chemical reactions. Let's see now. First is alcoholic fermentation. So it occurs in plants like the yeast, a fungus, जो भी हमारे आसपास alcoholic drinks होते हैं, that get prepared by the fermentation process, and that fermentation process is a very good example of anaerobic respiration. Next is lactic acid fermentation. It occurs in animal cells. It can be represented as follows. Here, if we are having the glucose, so then glucose can break down into the two molecules of lactic acids and it can produce the 2 ATP. What is ATP? ATP is the currency of energy, or it is called energy currency. It produced by the mitochondria, and its full form is adenosine triphosphate. So during this process, no carbon dioxide is released. So it is such kind of respiration in which we do not get the carbon dioxide as a byproduct. Question number 39 is, what are the stages of respiration? अब आपसे stages भी पूछी जा सकती हैं respiration की, तो आप उनको ऐसे याद कर लेंगे. Respiration takes place in the following stages. First, external respiration or gaseous exchange. The exchange of gases between the environment and the body is called external respiration or gaseous exchange. So, external respiration, when we are or the plants are exchanging the gas with the help of the environment, तो वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है. जो बाहर से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल ब्रीथिंग. Second is internal respiration. The biochemical processes involved in respiration, which break down the substrate to release energy, take place in the tissues within the cells of an organism. Thus, this is also called the cellular or tissue respiration. So, when air reach inside our body और वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर एक बायोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट करती है. कैसे? जब वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करना शुरू करती है और फूड से मिलने वाले ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है और उससे जो एनर्जी हमें मिलती है, उस एनर्जी से हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, दे स्टार्ट टू परफॉर्म देयर फंक्शनिंग. So that kind of respiration is known as cellular or tissue respiration. So here are two stages for the respiration. One is the external respiration or gaseous exchange or breathing. Another one is the internal respiration, which is called actually respiration process because it is providing us energy. Now let's see the next question. Question number 40 is, What is the significance of respiration? अब आपको respiration का significance बताना है, क्या importance होती है. ये बच्चों हमेशा ही पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से याद करें. So, respiration is an important process in nature. First thing is this, it is very important process. यदि respiration ही नहीं होगा तो हम survive ही नहीं कर सकते हैं. It is the process by which the organic compounds are broken down to release energy in the form of ATP molecules. तो यही एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक कर सकता है और इसके बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है. किस फॉर्म में? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में. इट इज ऑल्सो नोन एज energy currency. Respiration makes use of oxygen and releases carbon dioxide
which is then used by plants during photosynthesis that releases oxygen. अब जब रेस्पिरेशन प्रोसेस एनिमल्स में कंप्लीट हो जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. And as you know, the value of the carbon dioxide, as plants complete their photosynthesis process with the help of carbon dioxide only. And after that, they will release the oxygen for the animals. So it is a biocyclic process जिसके थ्रू प्लांट्स भी सर्वाइव कर रहे हैं और एनिमल्स भी सर्च पर सर्वाइव करते रहते हैं. Thus, respiration has an important role to play in maintaining the delicate oxygen carbon dioxide balance in nature. So that's why respiration is a marvelous and fabulous process to maintain the oxygen carbon dioxide balance in nature. यदि ये बैलेंस नहीं होगा तो इस धरती पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, वो फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे. They have to stop. So here I did try to explain you most important questions of the topic respiration. In my next video, again I am going to explain you few important questions from the same topic respiration. So just be with me, like, share and subscribe my channel and get updates. Have a nice day. Have a happy day. Bye bye.